I think sometimes you just connect with certain people, and It's just always been super sweet and just great energy. Kourtney Kardashian just inserted herself straight into the ongoing Selena versus Hailey chaos, and fans absolutely did not see this one coming. After Hailey Bieber's latest shady Instagram move sent the internet into a tailspin, Kourtney's reaction has people convinced she's finally picked a side, and spoiler alert, it's not Team Hailey. So what exactly did Hailey do that crossed a line? And why is Kourtney suddenly jumping into the middle of the drama? Let's unpack everything. Back in April 2023, Stan Twitter and TikTok exploded when Kourtney Kardashian posted what seemed like just another innocent Lemmy promo video. Except eagle-eyed fans caught something that had them spiraling. It wasn't the Irish sea moss drop she was pushing that caught attention. It was her background audio choice, none other than Selena Gomez's 2014 heartbreak anthem, "The Heart Wants What It Wants." Instantly, fans transformed into detectives, convinced Kourtney had just soft-launched her support for Selena right in the middle of Hailey and Kylie's mess. The timing was suspiciously perfect. Peak shady subtext energy, just as the internet was unraveling the Eyebrowgate scandal. Quick rewind in case you forgot how messy this all got. In February 2023, Selena shared a super relatable TikTok about accidentally over-laminating her brows, something we've all done. Then suddenly, Kylie Jenner posted an Insta story with the caption, "This was an accident," followed by a FaceTime screenshot with Hailey, both of them zooming in on their eyebrows. The internet instantly saw it for what it was, full-blown mean girl behavior aimed at Selena. The backlash? Brutal. Kylie lost over 1 million followers overnight, dropping from 380 million to 379 million, while Selena had her massive glow-up moment, briefly becoming the most followed woman on the app. That's karma in HD, bestie. Kylie tried doing damage control, hopping on TikTok to say, "This is reaching. No shade towards Selena ever. I didn't even see her eyebrow post. Y'all are making something out of nothing." Selena clapped back with a polite "agreed" and added, "I'm a fan of Kylie," but the internet was already picking sides like it was the Hunger Games. This is where Kourtney's TikTok enters like a plot twist. The real kicker wasn't just the song choice, it was the family dynamic. Kourtney is Kylie's literal big sister, so choosing Selena's track during peak drama felt like a loud and clear, "I'm not like the other sisters" statement. The comment section went feral with takes like, "Kourtney is Team Selena," and "she knew exactly what she was doing." Suddenly, fans were living for the idea that she had thrown subtle shade at Kylie and Hailey's clique. To make things even juicier, there's an actual link between the families that flew under the radar. Kourtney's daughter Penelope is super close with Selena's sister, Gracie. Yup, that Gracie. So now we're in full 6 degrees of separation territory. And, allegedly, Kourtney's son, Mason, is Team Hailey and Kylie, meaning Kardashian. Dinner nights might be serving more tension than turkey. Social media exploded with theories. Reddit users joked, "Let me promo FT Selena Gomez," while Selenators on X, aka Twitter for the millennials still hanging on, started speculating that Selena and Kourtney had been low-key mutuals for a while. Others were just plain confused, dropping comments like, "Wait, so she's not Team Kylie?" The parasocial energy was at an all-time high. But here's the real power move. Kourtney never addressed it. She just posted and dipped. No explanation, no follow-up, just vibes and chaos. And honestly, that silence was louder than any statement. Iconic. Let's not forget, the Selena versus Hailey saga has been brewing since 2018, when Hailey officially became Mrs. Bieber right after Justin's final situationship with Selena fizzled out. After 8 years of on-and-off drama between 2010 and 2018. That history created the perfect conditions for full-blown stan warfare, where every single like, follow, and emoji comment is treated like coded language.
Hailey even tried to shut it all down in a 2023 Bloomberg interview, insisting there's no real feud. She said, "I don't think that this is about me, Hailey Bieber, and Selena Gomez. This is not about this pitting between two women and division, between two women. It's about vile, disgusting hatred that can come from completely made up and twisted and perpetuated narratives that can be really dangerous." Honestly, she had a point. Even Selena herself stepped into her peacemaker era and spoke out against the vitriol Hailey was getting. In March 2023, she posted, "Hailey Bieber reached out to me and let me know that she has been receiving death threats and such hateful negativity. ये वो चीज़ नहीं है जिसका मैं हमेशा साथ दिया है। किसी को भी नफरत या बुलिंग का सामना नहीं करना चाहिए। मैं तो हमेशा काइंडनेस का एडवोकेट रही हूँ और सच में चाहती हूँ कि ये सब खत्म हो।" हले ने इंस्टाग्राम पे सेलिना का शुक्रिया अदा किया, जिससे कुछ वक्त के लिए स्टैन आर्मीज का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। लेकिन जितनी कोशिश की गई कि सब मूव ऑन करें, फैंस का ऑब्सेशन उनके बीच के सो कॉल्ड बीफ से कम नहीं हुआ। हर मूव, हर पोस्ट को माइक्रोस्कोपिक डिटेल में एनालाइज किया जा रहा है। कोर्टनी का वो टिकटॉक जिसमें उसने सेलिना का सॉन्ग यूज किया, बस एक मिसाल थी कैसे तीसरे लोग भी इस नैरेटिव में घसीटे जा रहे हैं, चाहे उनका इरादा हो या ना हो। दूसरी तरफ काइली जेनर और हेली बीबर ने अपनी राइड और डाई फ्रेंडशिप हर ड्रामा के बावजूद मेंटेन की हुई है। दोनों ओवर अ डेकेड से इंसेपरेबल हैं, हर इवेंट पे साथ में फैशन सर्व करते हैं और एक दूसरे को सोशल पे हाइप देते रहते हैं। जून 2024 में काइली ने इंस्टा स्टोरीज पे कुछ थ्रोबैक फोटोज शेयर की, जिसमें उसने हेली के साथ अपने केयरफ्री टीन ईयर से लेकर मदरहुड तक के सफर को रिफ्लेक्ट किया। एक मिरर सेल्फी जिसमें दोनों अपने मैचिंग बॉब एरा में हैं। कैप्शन था, "वेयर मॉम्स नाउ वर्ड हेली बीबर", और एक और फोटो में केंडाल भी थी, जिसमें कैप्शन था, "आई मीन आरंट हेली बीबर और केंडाल जेनर"। ये सब दिखाता है कि उनकी दोस्ती ने इंटरनेट के नॉइज को ईजिली सर्वाइव कर लिया। सोशल मीडिया के ज़माने में सेलिब्रिटीज़ और उनके स्टैंस का रिश्ता इतना इंटेंस हो गया है कि फॉलोअर्स समझते हैं जैसे वो अपने फेव्स के बीस्टीज हैं, और हर छोटी से छोटी कंट्रोवर्सी में इनसाइड लेना उनका हक है। ये कोई नई बात नहीं कि काइली और हेली की दोस्ती जस्टिन के साथ हेली के शादी के काफ़ी पहले से है। एक 2018 इंटरव्यू में एल के साथ केंडाल जेनर ने खुद बताया कि हेली पहले काइली की बेस्टी थी, लेकिन फिर केंडाल ने उसे स्टील कर लिया, जिससे एक छोटी सी सिस्टर ड्रामा सिचुएशन क्रिएट हो गई। केंडाल ने कहा, "हेली बीबर वॉज एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड्स विथ काइली एंड आई वॉज गुड फ्रेंड्स विथ हर कजन आयरलैंड। उन्होंने ये भी शेयर किया कि वो सब न्यूयॉर्क के पार्टीज में साथ जाते थे, जो उनकी फ्रेंडशिप की डेप्थ को दिखाता है। और इसी वजह से कोर्टनी का सेलिना का सॉन्ग यूज करना और भी ज़्यादा शॉकिंग लगता है। ये तो ऐसा था जैसे अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके दूसरी टीम चूज कर लेना। कार्डाशियंस हमेशा एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाते हैं, जैसे सब सिस्टर्स एक दूसरे के लिए वर्ल्ड के अगेंस्ट खड़ी हैं। इसीलिए जब भी कोई हिंट मिले कि कोई सिस्टर रैंक ब्रेक कर रही है, तो वो इंस्टेंट हेडलाइन बन जाता है। हेली की कार्डाशियंस के साथ जो कनेक्शंस हैं, वो काफ़ी डीप हैं। किम कार्डाशियन ने पब्लिकली हेली और जस्टिन को हाइप किया है। 2034 के कोचेला पोस्ट पे कमेंट किया, "आई लव यू गाइज", जो क्लियरली दिखाता है कि शी इज टीम हेली ऑल द वे। हेली ने किम से बिजनेस एडवाइस भी ली है, जो प्रूफ करता है कि हेली का इंटीग्रेशन कार्डेशियन एम्पायर में सॉलिड है। जून 2023 के एक एपिसोड में अपने हुज इन माई बाथरूम यूट्यूब सीरीज के दौरान हेली ने रिवील किया कि किम लिटरली पहली पर्सन थी जिसे उसने रोड ब्रांड लॉन्च करते वक्त कॉल किया था। ये बिजनेस कनेक्शन दिखाता है कि हेली अब प्रैक्टिकली कार्डेशियन एंटरप्रेन्योरियल गर्लीज का हिस्सा बन गई है, और इसलिए कोर्टनी से आए कोई भी परसीव्ड शेड और भी ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है। हेली ने यह भी साफ कर दिया है कि वो कार्डाशियन जेनर बिजनेस क्वींस के साथ compete करने का कोई इरादा नहीं रखती। 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के WSJ टेक्च लाइव कॉन्फ्रेंस में उसने कहा, "वो विमेन अमेजिंग है और वो मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड्स हैं और मैं उनके सारे ब्रांड्स को दिल से पसंद करती हूँ"। यह दिखाता है कि वो अपनी बेस्टीज को हाइप करना चाहती है, न कि ड्रामा क्रिएट करना।
अब अप्रैल 2025 तक का तीर ये है कि काइली और हेली की दोस्ती और भी मजबूत हो गई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक काइली और केंडल ने हेली को अपने मैरिज के कुछ रॉकी मोमेंट्स के दौरान इमोशनल सपोर्ट दिया। वो दोनों अपनी गर्ल्स नाइट्स और इमरजेंसी बेस्टी सेशंस के थ्रू हेली को इस चैलेंजिंग टाइम से गुजारने में मदद कर रहे हैं और इससे सबको ये प्रूव हो रहा है कि उनका बॉन्ड सिर्फ सरफेस लेवल फोटो ऑप से कुछ ज़्यादा गहरा है। अब फुल वाइब चेक समझने के लिए हमें सेलिना के पर्सपेक्टिव को भी समझना होगा। जबकि सेलिना ने डायरेक्टली हेली बीबर के बारे में कभी कोई वीडियो नहीं दिया, लेकिन मार्च 2023 में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे उसने एक काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट दिया। सेलिना ने कहा, हेली बीबर ने मुझसे कांटेक्ट किया और बताया कि यूज डेथ थ्रेट्स और इतनी हेट फिल्ड नेगेटिविटी मिल रही है। ये वो चीज़ नहीं है जिसको मैं सपोर्ट करती हूँ। कोई भी नफरत या बुलिंग का शिकार नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा काइंडनेस की एडवोकेट रही हूँ और सच में चाहती हूँ कि ये सब बैंड हो। ये एक वीडियो या इंटरव्यू नहीं थी, बस एक सिंपल आईजी स्टोरी थी जिसमें वो टॉक्सिसिटी को एड्रेस कर रही थी, लेकिन हेली के साथ अपने पर्सनल रिलेशनशिप को या कोई भी टी शेयर नहीं कर रही थी। ये बेसिकली सेलिना का पहला और क्लोजेस्ट अटेम्प्ट था कि वो पब्लिकली हेली को एक्नॉलेज कर रही थी और ये बस अपने स्टैंस को चिल करने के लिए था। दूसरी तरफ हेली ने अपने साइड को ज़्यादा ओपनली डिस्कस किया है। उसके में रिसीप्ट्स आती हैं हेली के इनफेमस कॉल हर डैडी पॉडकास्ट इंटरव्यू से, जहां उसने फाइनली सारी होम रेकर एलिगेशंस का जवाब दिया। पॉडकास्ट में हेली ने बिल्कुल सीधा कहा, जब हम दोनों साथ टाइम स्पेंड करने लगे तो समझ लो जब हम दोनों हुकअप कर रहे थे या कुछ भी ऐसे ही, वो कभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं था, कभी भी। उसने वो पुरानी नैरेटिव भी एड्रेस की जिसमें कहा जाता था तुमने उसे चुरा लिया, और उसका कहना था ज़्यादातर हेट और परसेप्शन इसलिए है क्योंकि लोग ये चाहते थे कि वो किसी और के साथ हो, और ये फाइन है, तुम चाहते हो कि ऐसे हो, लेकिन ये सच नहीं है। हेली ने यह भी क्लेम किया कि उसने सेलिना से बात की थी अपने मैरिज के बाद और बोला, इसीलिए मैं कहती हूँ सब कुछ रिस्पेक्ट के साथ है, सब कुछ लव के साथ है। ये डायरेक्ट कोट्स हेली के अपने ड्रामा को क्लियर करते हैं और सेलिना के लिए इज्जत दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फैंस का कहना है कि पब्लिक में जो कुछ भी बोला जा रहा है उसे ज़्यादा कहानी है। फिर प्लॉट में और भी ट्विस्ट आता है जब फैंस ये थियोराइज करते हैं कि हेली को सेलिना का ऑब्सेशन है। एक मेजर पीस ऑफ एविडेंस जिसको फैंस पॉइंट करते हैं वो है उनका जी टैटू। सेलिना ने 2015 में अपने सिस्टर ग्रेसी के लिए अपने कान के पीछे जी टैटू बनवाया और फिर हेली ने कुछ दिन बाद अपने पस्टोर की बेटी के लिए सिमिलर टैटू बनवाया। सेलिनेटर्स ने इससे इंटरप्रेट किया कि हेली ने सेलिना का स्टाइल कॉपी किया। एक और एग्जाम्पल जो इंटरनेट को फायर कर गई थी वो थी उनकी कुकिंग शोज। हेली का 2021 का यूट्यूब सीरीज व्हाट्स इन माई किचन सेलिना के सेलिना प्लस शेफ के वाइब्स देता था, जो 2020 में HBO मैक्स पे रिलीज हुआ था और 4 सीजन्स तक चला। दोनों शोज में उनकी ग्रैंड मदर्स गेस्ट अपीयरेंसेस कर रही थी, जिसकी वजह से फैंस ने यह कह दिया कि हेली ने सेलिना का कंटेंट बिल्कुल कॉपी किया। स्टैंस ने फैशन और पोजे सिमिलैरिटीज के थ्रेड्स भी बनाए, जिसमें आइडेंटिकल रेड कार्पेट लुक्स और कैजुअल आउटफिट्स को हाईलाइट किया गया और सजेस्ट किया गया कि हेली ने सेलिना के स्टाइल आर्काइव को केयरफुली स्टडी किया है। ये थ्योरीज टिकटॉक सीरीज और फैन मेड डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए वायरल हुई, जिसमें साइड बाय साइड कंपैरिजंस दिखाए गए। ये सब क्रेजी थ्योरीज जो हेली के सेलिना के फिक्सेशन के बारे में चल रही हैं, उन्होंने ऑनगोइंग नैरेटिव को फ्यूल किया है और इसलिए कोर्टनी का सेलिना के सॉन्ग का चॉइस भी किसी एक साइड को लेने जैसा लग रहा है, जिसे एक बहुत बड़ी ड्रामा का हिस्सा समझा जा रहा है। और इसके साथ एक पुरानी हिस्टोरिकल कनेक्शन भी है जस्टिन बीबर और कार्डेशियन जेनर क्लैन के बीच, जो और भी कॉम्प्लेक्स बनाता है सिचुएशन को। द कट ने 2018 में रिपोर्ट किया था कि जस्टिन का रूमर्ड सिचुएशनशिप कोर्टनी कार्डाशियन और केंडल जेनर दोनों के साथ था और 2010 में किम के साथ उसकी स्टीमी फोटोशूट भी थी। These past connections create this weird 6 degrees of separation vibe where everyone in this story has some previous link to each other.
Even Kris Jenner has a connection to this whole saga through her relationship with Corey Gamble, who has worked for Justin's manager, Scooter Braun, since 2014. This creates this whole complex web of business and personal relationships connecting the Biebers and Kardashians, making Kourtney's apparent support for Selena seem like an even bigger plot twist in an already tangled story. Recent reports suggest that this drama is far from over. Sources say there are concerns about Justin's behavior, with some worrying signs, including erratic social media activity. Kylie and Kendall Jenner have played a big supportive role for Hailey in these challenging moments. An insider spilled to dailymail.com, Kylie and Kendall know Justin better than anyone, and they also know how unhappy Hailey is at the moment, showing how deeply involved they are in Hailey's personal life. The reports claim Kendall has been trying to convince Hailey to stage an intervention for Justin with close friends, while Kylie has been Hailey's emotional rock throughout this rough patch. Despite these challenges, the friendship between Kylie and Hailey appears stronger than ever, with no signs of any strain. This fits with earlier reports of Hailey leaning on Kylie during a girls' trip to Aspen in January 2025, when the first round of split rumors with Justin started circulating. This proves that their bond transcends any drama. All these interconnected relationships and histories create this wild web of loyalties, friendships, and potential drama that gives context to simple actions like Kourtney's TikTok song selection. When viewed through this lens, her decision to use Selena's track seems like a calculated move, whether she meant it that way or not. The so-called Selena versus Hailey beef was intense, with stans fully investing their entire personalities into defending their faves. During peak drama in 2023, Selena gained over 10 million Instagram followers practically overnight, while Hailey lost hundreds of thousands, dropping below the 50 million mark. These numbers show how quickly the court of public opinion can shift, with real consequences for celeb social clout. Stans have become absolutely unhinged in how they interpret every single social media move. When Hailey posted a TikTok in January 2023, lip-syncing to "I'm not saying she deserved it, but God's timing is always right," the internet immediately assumed she was throwing shade at Selena, who had recently dealt with body shaming. Trolls. Similarly, the whole eyebrow gate situation with Kylie was immediately read as a coordinated attack, leading to weeks of discourse and cancellation attempts. This level of analysis has divided the internet into hardcore Team Selena or Team Hailey camps, with stan accounts dedicating their entire online presence to defending one celeb and dragging the other. They've become full-time internet detectives, analyzing every post, like, comment, and interaction for potential tea or hidden messages. For example, when Selena defended her bestie Taylor Swift in a comment after a throwback video surfaced of Hailey gagging at Taylor's name, it immediately became another chapter in this ongoing saga. Some stans remain completely skeptical of all the "we're cool now" PR statements. Even after both Selena and Hailey have publicly tried to squash the beef, certain fans are convinced it's all fake. For instance, a TikToker in March 2025 claimed they had receipts showing Hailey liked a video mocking Selena and her fiancé, Benny Blanco, sparking a fresh round of drama. The user Sir Courtney Presto stated, "I feel like this is definitive proof that when Hailey Bieber's like, 'Oh, it's all love, it's all good, we have absolutely no beef, everything is completely fine,' she's lying." This shows how determined some fans are to keep this narrative alive. Hailey's team quickly shut this down with her rep telling People magazine, "This never happened. This is a completely fabricated scenario, something that unfortunately happens often. People making things up for attention and engagement, but by then the algorithm had already boosted the original claim, showing how hard it is to contain these fires once they start." Selena's music has also become part of this whole drama cycle. Her track Don't Take It Personally, which dropped on March 21, 2025, as part of her album I Said I Love You First with Benny Blanco, immediately had fans convinced it was her, finally addressing the Hailey situation with lyrics like,
I know the two of you used to talk like every day, and please don't take it personally. Some things are just meant to be." Stans went wild connecting dots to the Justin, Hailey, Selena triangle. In the official album commentary, Selena gave some context, saying, "It was actually told to me, and this is actually the experience of someone, maybe in my past, that had gone through whatever they needed to go through to get through life. This is odd to say, but yes, I'm the person that it happened to." This explanation reveals the song is based on Selena's experience as the ex being addressed by her ex-boyfriend's new girlfriend. However, in a twist, she's singing from the perspective of the new girlfriend, telling the ex to move on. This layered approach sent Stan Twitter into absolute chaos trying to decode the true meaning before the album even dropped. Leaked lyrics like, "You probably got a dartboard of my face right in the middle," had Stan accounts immediately assuming the song was a direct shot at Justin and Hailey. Despite both parties continuously denying any ongoing beef, fan reactions to the song were absolutely polarizing. A J14 article noted, "Fans think Selena Gomez may have ditched her kill him with kindness mindset," suggesting Selena was finally clapping back after years of taking the high road. Others argued that the song was actually about Benny, Blanco's past, not Hailey, based on Selena's explanation. The Daily Mail reported, "Selena Gomez fans are sharing their theories about her latest album, and some are convinced one of her new songs has subtle mentions of her ex Justin Bieber and his wife Hailey Baldwin, highlighting how this narrative refuses to die, even years after the actual relationships ended." Circling back to Kourtney's apparent defense of Selena through her TikTok song choice, it's worth noting that this wasn't the only time a Kardashian family member has been dragged into this narrative. The Kardashian-Jenner clan is constantly being analyzed for potential allegiances, with even the most casual interactions being interpreted as major statements. When Kourtney used Selena's song, it happened during a period when the Kardashian-Jenner sisters were dealing with their own internal drama. As usual, Kourtney's relationship with her sisters has had plenty of documented ups and downs over the years on their reality shows. So, her apparent support for Selena could be read as both a statement about Selena versus Hailey and a reflection of where she stood within her own family at that moment. This ongoing obsession with the perceived feud reflects how celebrity culture has evolved in the social media era. Fans now feel entitled to full access to celebrities' personal relationships, with social platforms providing both the tools for speculation and the metrics, likes, follows, comments, that seem to validate or contradict these fan theories. The involvement of stan armies has sometimes escalated to concerning levels. The feud has resulted in serious consequences, including death threats and harassment directed at both Selena and Hailey. Both have spoken out against this toxic behavior, but a segment of fans continues to engage in problematic behavior, often for clout or engagement. While many stans are firmly entrenched in one camp or the other, others have shown support for both Selena and Hailey, condemning the online hate. When Selena spoke out against the death threats Hailey was receiving, some fans praised her maturity and kindness, showing that not everyone is here for the drama. There are also fans who think the whole feud narrative is completely overblown and that these celebrities are actually on good terms, pointing to evidence like Hailey reportedly liking some of Selena's posts in late March 2023 as proof that things are chill behind the scenes. As of April 25, 2025, the feud remains a topic that gets engagement, with incidents like the March 2025 TikTok accusation keeping the flames alive. However, both Selena and Hailey have mostly succeeded in encouraging fans to touch grass and move on, as evidenced by their consistent efforts to shut down rumors and focus on their own lives and careers. This absence of direct confrontation or clear communication between the main characters in this drama contributes to the ongoing speculation. As fans are left to interpret actions rather than explicit statements, the perfect conditions for conspiracy theories to thrive.
Recent developments in Selena's personal life, such as her engagement to Benny Blanco and continued professional success, suggest she's fully moved on from the drama. Similarly, Hailey has been focused on her marriage and her Rhode skincare empire, showing a desire to leave the perceived feud in 2023 where it belongs. However, stan culture continues to keep the narrative alive, with social platforms providing endless opportunities for speculation and interpretation. Kourtney's TikTok shows how even a simple audio choice can become headline news when it fits into an existing narrative that fans are already invested in. Drop your thoughts in the comments. Are you Team Selena, Team Hailey, or Team Everyone Just Move On Already? Let us know. Thank you for watching. If you enjoyed this video, click on one of the boxes playing on your screen to watch more similar content.